So hello friends, welcome to Community Monday Meetup, South Asia. So like every Monday, we are back with the Monday Meetup, South Asia edition. And today we have a lot of information to share. Not a lot, but like more than usual. So first of all, we are going to have a Giablo design month. So many of you might know about Giablo. So Diablo is basically he was a like a senior design contestant at Topcoder. So what happened was I think he, because of some complication or maybe some health issues, I think he died last year or maybe in 2020 he died, and not because of COVID. I think because of some other reason. And up from that from then on, because he was like a very senior competitor, and he was like very well respected in the community as well. We are having we are going to have a, what do you call this, a month of celebration in his honor. Okay, so I'm sharing the link over here. I think the challenge is not hosted yet, or maybe there are some issues. But anyway, I've shared the link. And in case there is any issue with like finding the challenge, you can just always come to challenges, topcoder.com/challenges, and you can find it. Okay. And then like talking about NASA. Actually, what happened was in the comet detection challenge, Topcoder actually successfully managed to find 2 new comets. So comets, as you know are like heavenly bodies or like objects in space. So so using machine learning and AI, the contestants were able to find 2 new comets. So which even NASA didn't know about. Okay, so this is like a very big achievement by the contestants of Topcoder, and those contestants have also gotten like recognition for this. So from what I know, share the link as well. I think there is going to be a like a presentation about this as well. So it will be explained in detail how they managed to find it, and like what approaches they used, and what is the importance of this discovery, etc. Okay. So if you are interested in this, anybody who's interested, you can come and see it here. So this is a link. I don't know if this is visible on YouTube or not. If it is not visible, what I would suggest is that you come to Discord, and Discord you can just ask for the link. Okay, either it will be shared over there automatically before the event, or you can come and ask, and we'll be happy to share. Okay. Now we have the Topcoder Nation show. So in the Topcoder Nation show, what usually happens is just a minute. So usually what happens is like we invite certain members from the community, or maybe from the admin side. Like they can be from any part of the community. Like they can be, like last time we had the CEO of Topcoder, and before that we had some members from Topcoder. So it can be anyone who is related to Topcoder. So like this coming Topcoder Nation show, we are going to have Trevor. So Trevor works on Topcoder products and shares wisdom on the design process and its works. Okay, so I think he works in the management, or maybe he works in the product development of Topcoder, because I don't personally see him a lot in the community. So I think he's more in the backend side of the things. So if you would like to know how things work behind the scenes, this would be a great way to know more about it. So I'll share the link again. Okay, so I'm not shared the link. Yeah. So this is going to happen on May 17th. Okay, and this is the timing for GMT plus 5:30. So Indian Standard Time, this is the timing. For other timings, you'll have to adjust accordingly. Okay. Now then we have the Hangout Friday, number 6. Okay, so this is basically a fun event. So there's nothing too like serious about this. This is just going to be a, like a as the name says, it is just going to be a Hangout Friday. Okay, so what we are going to have is like small contests and fun events and prizes, things like that. So if you are free on May 27th at this time,
10 a.m. UTC -4. You are welcome to join, and yeah, I think it will be like a fun event. Okay. Let me see if I have a link or not. So I do have a link. So this is the link. So finally I have a link, because previously I think the link was not set up. So now it's set up. You can just come and join. If you can't see the link on YouTube, you can always come to Discord and we'll be happy to share the link with you. Okay. 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 Hangout Friday. So we have a question that Hangout Friday number 5 was a type race. This one same. I'm actually not exactly sure. I'd be happy to like ask about this, because I actually wasn't a part of the last one. I'm looking forward to join this one. But if you have any other ideas as well, you can always suggest. So like what sort of an event was it? Like, was it only on Discord, or was it on some other platform? Because I remember seeing some events like some typing race on Discord. Okay, it was on Zoom. Okay, so I think maybe this time maybe they'll have something different. But I'm not sure. I'll ask. Okay, you just note it down. Hangout Friday. Okay, so moving on to like currently we are having a lot of ideation challenges going on. Okay, so if you come over here and if you just search ideation, you'll be able to find several ideation challenges. For example, like I can see 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so many of these are like NFT challenges. So NFT, as you might know, is like related to blockchain. So if you are aware of that, if you would like to like learn more about it, like this is a very good opportunity to actually learn more, and also maybe win some prizes. So as you can see, there are all kinds of ideation challenges going on. Like some are related to design, some are related to development, some are related to data science. So whatever is your area of expertise, you can just come and check it out. Maybe you'll be able to contribute something to the ideation process as well. Okay. And yeah, and like I'm seeing a lot of NFT challenges lately. So I think it's a very good thing that Topcoder now has like blockchain related competitions. Uh, as we see a lot of like blockchain activity around us. For example, a lot of people are investing in crypto, and people are becoming more aware about NFTs, etc. So now is a good time to know more about this. And frankly speaking, I used to know a bit about blockchain like 2-3 years ago when it first came out, but I personally have not been keeping a track on this. So I think maybe even I will try to join and see what is going on in these challenges. Okay. So maybe I'll see you there. Okay. Now, Topcoder skill builder competition, Microsoft Power Apps. Okay. So yeah, I'll come back to your question. I'll just continue the presentation for now. I'll come back. Okay. So right now, what is going on is Topcoder skill builder competitions are going on, where we are trying we are actually trying to help people build expertise in something new. So as you might know, like there is a offering from Microsoft. It is called Power Apps. So sometimes I've seen that there are many gigs at Topcoder where Power Apps is required. Okay. So maybe like in case you want to build your skill in this area, so this is a wonderful opportunity to do that. So what happens is like I'll give you a brief overview about skill builders. So the goal of skill builders is that it is meant to help you with building a like skill, like the name says, skill in some area. And apart from that, from what I have seen, is that when you compete in this, you will also get some experience in like competing at Topcoder and like understanding how the like submission process works, how the review process works. So it is like a very good way to understand the nuances in the platform. Like for example, there are some like positive elements of the platform as well, maybe some negative elements. Like many people think that there is some variability in the review process. So many people discover that during the what do you call that?
while competing on skill builders. So what happens is you get to learn these here itself. So that when you compete in a like a larger challenge, you will be aware about these things. So for any new member or maybe someone who has not competed in a long time, I would suggest that you definitely check these out, skill builders. And on Topcoder, we usually have a lot of skill builders going on at any time. So if you just search for skill builders, you can see a lot of skill builders over here. So most of them are power apps. And I think from time to time, you will see other kinds of skill builders as well. Okay. Yeah. So TCO feedback. So as you might know, this year, that there is a lot of talk about like making changes to Topcoder Open. Okay, so as like people who know about Topcoder Open, if you don't know, just go to tco22.topcoder.com. Okay, I will share the link here. This let me write that again. tco22.topcoder.com. Okay, so you will get to learn more about this. So what we are trying to do is like there has been a like the same pattern for a long time, and we are now looking to like make some like consider making some changes to it. But what we are seeing is that we are getting a lot of ideas, but like many of them are like too different, as in like there are like they are like either like extremely different or they are like very small suggestions. So right now we are in the process of like gathering as much information as we can, and then later what we'll do is there is a Topcoder committee which I am a part of. So what that is doing is it will finally decide like what sort of process we should have in the future. So I think those changes will not happen this year. Okay, so for TCO 22, I think it will be similar to the past years. So any changes that will happen is for the future, you can say for this decade. Okay, for this decade we'll be deciding right now. So how to go about things and how to organize everything. So now is a very good opportunity if you like, even if you might not have qualified this year, but if you want to, like you might qualify in the future. So if you have any suggestions, I would strongly suggest that you share those. Okay. So I've shared the link. Oh, I'm not sure. I shared here. Where is the link? You can just come here and you can suggest your ideas, and and I would suggest that you can always contact Jesse directly, and also we have like a dedicated TCO channel on Discord. Okay, so you can come there and you can share your ideas. Okay, so yeah, so get yourself heard. If you have any ideas, even if it is like a small idea, it is always good to like share it. Okay, and then we'll see how to take it from there. Okay, so now moving on to, we are having this hydropower operations optimization prize. So this is like a US based challenge. Like it is, I think it is related to the US, what do you call that? Um, I think it is a department in US. Okay, and the key requirement in this challenge is that you should be a citizen. I mean, teams are allowed in this. Okay, but someone in the team who is going to accept the prize it should be an like American citizen, not just a resident, because many people are resident over there. Like in case he's like people from India who actually like go and live in the US or work over there, they might be residents, but they might not be citizens. Okay, so citizenship like it is not like easy to get. So I think I've seen what many people are doing is that they are creating groups where at least one person is like a citizen in the US. Okay, so that way maybe you can try and win this prize. But otherwise, you need to be careful that if your team is entirely made up of non-citizens, then even if you win the challenge, you will not get the prize. So yeah, but the challenges are very interesting. So I would suggest that you check these out. Similar to what I just suggested, you can just come here and search for them. And yeah, so here it is. You just have to come to topcoder.com/challenges and then search for it. Here it is. Okay, I'll share the link. That's the link. Okay. Okay, now moving on to top gigs. So till now we have been talking about challenges. Now moving on to gigs. So at Topcoder there are like two types of work. Technically there are three types of work, because one is competitive programming. So that is not work. I mean, I would say that is like Olympiads.
Olympiads or like pure challenges or pure competitions. So those are meant for like people interested in time complexity, memory complexity. People of who have interest in that area, they usually compete in like what do you call that? Competitive programming challenges. Okay, and apart from that, like in order to make some money while winning challenges, you have like challenges of this type. I mean this type where you can find these at topcoder.com/challenges, like I've suggested. And the third type is that you actually get a direct temporary job. Okay, so the meaning of gig is basically like the honest meaning is like a temporary job. And as you can see, the payments are actually very good, particularly for our region, like South Asia. Like in our region, I think like the software developers like usually earn anywhere between like 30,000 rupees to maybe 3-4 lakhs per month. That is the range normally. For the higher end folks, it goes to maybe higher, maybe possibly. But over here, you can see it is consistently above, like in the higher brackets over here. For example, you can see it is here $1,000 per week. So this is per week. Okay. So as you can see, the payments are like pretty attractive. But you need to be careful that at times it might not be open to everybody. Okay. So I'll show a couple of them. Some are like meant only for certain regions. For example, if you just look for India only, so these are India only. That means that you need to be an Indian to apply for this. I mean, to get accepted. You can apply, but you will not get accepted if you are from any other country. So you can see like when you open a link, you can see here, it says location India only. So you need to, I'm not exactly sure if you can be a resident of India or if you need to be an Indian citizen. I'm not sure. You need to actually maybe ask the support for that. But you need to be from India, and this will be the working hours. Okay. And also you need to be careful that sometimes what happens is that the location says India only, but the timing will be not Indian Standard Time. So in that case, you have to be ready to work in different time zones. So let's say if it is in the Pacific time zone, like in the Californian region, in that case, you have to wake up in the night and work. So please be careful in that regard. Okay. So when you look for any gig, please be sure that you will be able to work in those timings. So yeah. So I would suggest that you can just explore on your own. You can just filter by India only or any Asian country, or you can just view all and just go through it one by one. Okay. And see which one matches, which one you might be interested in. And like you can also search by skills. If like you have Python, just search by Python and it will be filtered by that. Okay. So that is generally how it works. So as you can see, it requires a Python skill. So it was visible over there when we search for it. So yeah, so this is basically how it works. Okay. If you have any questions regarding the gigs, you can ask me as well. But the correct person to ask it would be Corey, and Corey is available always on Discord. So on Discord we have a gigs section. So when you go over there, you can ask your questions, and she will be available to respond to you. Either she will respond, or maybe Becky will respond, and even like in case both of them are not available, then maybe someone else will respond. Okay. Okay. So we are at the last slide of our presentation today. So this is just a recap of like the upcoming important events. So as you can see, there are not like this does not contain all the challenges because you saw all the challenges over here, and there are actually sorry, yeah, over here. As you can see, there are a lot of challenges. So it is not possible to like mention all these challenges over there. So for challenges, you need to always come to here. I mean, this link, topcoder.com/challenges. But for other kinds of events, I will quickly go through this. So for April 6th to 20th, we have the hydropower optimization going on. Then we have the design month kickoff party. Okay. So design month is actually, I think, related to Diablo's design month that I talked about initially. Then on May 10th, we are going to have a getting to know Discord. Okay.
So like many people have joined Discord, but they might not know a lot about Discord. Okay. So to help you with that, we are going to have like a presentation for that on May 10th. Okay. Oh, but I'm not sure. Like maybe this could be something else as well. Getting to know Discord. Uh, this could also be getting to know somebody, which will happen on Discord, or maybe it will be getting to know Discord. I'm not quite sure. I'll have to actually confirm and let you know. Okay. Then on May 11th, it is SRM 829th. Then we have the rookie SRM 13th. So SRM is single round match. It is competitive programming. Competitive programming does not pay any money. It is pure competition. Okay. And that is like a completely separate category compared to challenges and gigs. So we have competitive programming, we have challenges, and we have gigs. Okay. And I personally am not like a big expert in competitive programming, because I initially used to compete in full stack development, and now I'm a data scientist. So I'm not really an expert in this area, but like many of you might be. So yeah, so if you are like interested in this, the SRM is going to happen on May 11th, and the rookie SRM is going to happen on 17th. Okay. Then on 17th, we'll have the Topcoder Nation show as well. Then from 18 to 25, we'll have marathon match 136. So marathon match is also a confusing term, because what happens is marathon match is also used for client marathon matches. I know it is confusing because I have noticed that personally as well. So what happens is that for machine learning, like large machine learning competitions, it is also called marathon match. And for competitive programming competitions, it is also called marathon match. So this one is a competitive programming marathon match. It is similar to SRM. Okay. So don't come expecting that it is going to be a machine learning contest. It is going to be a competitive programming contest. Okay. So it is going to happen on 18th to 25. Then on 21st, we are going to have the TCO22 algorithm round. So this again is competitive programming, similar to SRM and marathon match. Okay. And this is going to be for the people who are who are actually looking to qualify. This is the second round. Okay. So if you want to know more about the rules and regulations for this, again, I would suggest you to go to tco22.topcoder.com and go through the rules and regulations, and you can go through the algorithm track to understand how things work. Okay. Then on 24th, we have the NASA Comet Discovery, a recap. So like I informed that we are going to have this one. Here, you'll be informed how some Topcoder members managed to find 2 new comets for NASA. So it is a very big deal. And if you would like to know more about it, definitely consider checking this out. Okay. Yeah. Then again, on 27th, we have RDM 7. And then on May 27th, we have the Hangout Friday. This is going to be like a small party or maybe fun and games. Then again, we have the SRM 830. And then finally, on 31st, we are going to have a design freelancer fair. Okay, so freelance, I think there will be advice for freelancers, and maybe certain guests will be invited who can like provide you advice how to excel in your career as a freelancer. Okay, so if you are interested, definitely consider joining on May 31st. Okay, so as of right now, we are done with the presentation. And in case I noticed that one of our members who has joined actually missed the first part. So I would suggest that you check out the video once it is uploaded on YouTube. But if you have any questions, you can definitely ask. And I'm open to questions right now. And in case we don't have any questions, we can end as well, because it's 6. Look, those actually the official timings for these meetups is 5:30 p.m. to 6 p.m. Indian Standard Time. Okay, but I'm available to respond to questions even if like it goes beyond that. So yeah, I'm open to respond to any questions if you have any. Oh yeah, you had a question. It would be cool if Topcoder sends payment in crypto. Okay. Yeah, I think somebody was, I think Jesse was responded in the, somebody asked about this on Discord as well. And Jesse said that we are going to make some announcement, etc. So maybe there is going to be some announcement about payment in crypto or something like that. But it is not tax free. At least in India, it is not.
In India, I think a few days ago in the new budget, it was announced that it will be taxed at 30% flat. So definitely not taxed. I think if you get paid in normal currency, and if you earn less than 50 lakh per year, I think you have better options to like save taxes. And also, I think it is very volatile. I mean, for example, let us say you are paid in Bitcoin, okay, and you won like $1,000 worth of Bitcoin, and then when you go to withdraw, it will become $500. So I don't think it is very stable. So maybe you can take out the money and buy the Bitcoin yourself if you want to invest. But yeah, that is my opinion. It can differ. Somebody else might like to get paid in Bitcoin. I'm not sure. Yeah, but still, stable coins. Yeah, but still, uh, yeah. But if you have a preference for that, definitely. I personally don't have that preference, but in case you have, I think there might be something going on at Topcoder in that regard. Okay, so yeah, yeah. Even I use Pioneer right now. Yeah, so that this is also like a very big debate for like about Pioneer versus Western Union versus PayPal. So as a Topcoder representative, I normally don't suggest anything. But what I can say is that I use Pioneer because the main thing is that I immediately get the money, and that is what I want. Because I've noticed that in Western Union there are always some delays, and you can only withdraw like twice a month or something like that. And in my case, it is better for the money to be in my bank account instead of like being over there. Uh, because then I can choose to do anything with it. If I want to invest, I can invest. If there is an emergency, I can use it. Yeah, but I'm not endorsing Pioneer. I mean, everybody has their own preference. Yeah, it should definitely be optional. I don't want the option to get paid in like US dollars to go away. At least now. Maybe in the future, if it becomes like crypto only, we'll see. But at least not now. Any other questions? Oh yeah, you okay. Yeah, many people are using Pioneer mostly. But I've noticed that people who have been competing for like 7, 8 years, they actually prefer to use a Western Union. I'm not exactly sure why, because I actually tried Western Union, I think for 2, 3 months, but I noticed that because I was used to using Pioneer, and then finally I saw that in Western Union you have to wait a lot and see the date when it is coming, and I thought like it is better to just get the money, even if it is like 0.5% less. I don't care. So So about Python challenges, yeah, that is a very good question. Even I want to know that answer because actually I like when I co-pilot some challenges, I actually get to make some money in the process as well. I mean, as a co-pilot. So yeah, currently what the situation is that there are not a lot of challenges, like client challenges in the pipeline currently. But from what I've understood, that the new CEO is personally working in the so usually what happens is the CEO is like the doesn't work in any particular department, but currently I think the CEO is directly involved in the sales department. So I think in the near future there are going to be, I hope there are going to be like more challenges from the client side. And in the meantime, I think the Topcoder internal team is also going to learn some challenges to ensure that we have at least some challenges in the pipeline. By the way, Deepak, if you have any suggestions about Python challenges, please come and suggest that in the general chat in Discord, because I had a discussion with Jesse that what sort of challenges we should launch. So we were not able to decide. So what I suggested was that let us go and talk on Discord and let us see what people want to see. So we have received some suggestions, but you can go and write over there that it would be good to see some Python challenges.
So that way it would be easier for me to like push for it internally. Okay. Thank you. हाँ हेलो। हाँ या हिंदी हिंदी चलेगा। हाँ चलेगा। एक्चुअली अभी आरडीएम रिसेंटली हमने एक आरडीएम था ना, हम्म, 6 हम्म, कंप्लीट किया था। एक्चुअली उसमें कुछ इश्यूज वगैरह है कि उसमें तो पता ही नहीं चलता मेरे को चल क्या रहा है। ठीक है, मेरे को लगा पिछले टाइम जो लोग्स मिले हैं, लोग्स ठीक है, बट लोग्स में पता ही नहीं चलता एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ चल रहा है। इतने सारे मतलब जो लोग ठीक है, जो लोग बिगिनर नहीं, बिगिनर सुपर लेवल के हैं हम्म। उनको तो ठीक है, बट जो लोग बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल पे उनको दिक्कत होता है। और दूसरा एक और चीज, जब क्या बोलते हैं, पॉइंट जब डिसाइड होता है ना, तो वहां पे आप एक बार खोलो ना आरडीएम। यहाँ दिख नहीं रहा एक्चुअली, कहाँ मतलब खत्म हो गया लगता है शायद अभी। हाँ, कंप्लीटेड चैलेंजेस में होगा। आपने शायद ज्वाइन नहीं करा था। नहीं, मेरे को एक्चुअली बहुत कम आइडिया बस उसके बारे में। हाँ तो एक्चुअली ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है। मैं अभी पेना का ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को, नहीं तो हम्म, मैं उन्हीं से पूछता। तो एक्चुअली इशू क्या है ना, हम्म, कि जब भी पॉइंट क्या होता है कि अगर पॉइंट अगर 100/, जैसे कि अभी हमने इजी वाले में कंप्लीट करा, ठीक है, उसका हाईएस्ट वहां पे जो पॉइंट शो हो रहा था, हाईएस्ट पॉइंट वो 100/75 शो हो रहा था। ठीक है, बट जब वो रियल टाइम में जब आ रहा था ना रैंकिंग, ठीक है, तो वहां पे पॉइंट चेंज हो जा रहे थे। मेरे को समझ, या इनके पास भी इशू है, धर्म तेजा भी बोल रहे कि उनको भी इशू है करके। इतना कंफ्लिक्ट है ना, मतलब समझ में नहीं आता। मैं उस दिन फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दिया, मैंने पूरा चैलेंज ही छोड़ दिया। मैं मतलब अजीब सा हो रहा था मेरे साथ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था चल क्या रहा है यहाँ पे। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। हो सकता है एक कि उसका। पॉइंट, हाँ हाँ, क्या। देखिए मतलब बाय द वे, या धर्मा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी और डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और आई विल रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश बिकॉज हिंदी में या थी। देखो क्या है ना कि पहली बात तो है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, मुझे को आइडिया है नहीं, ठीक है, आरडीएम के बारे में ज्यादा। तो अब जहां तक मेरे को लग रहा है कि अगर सबको प्रॉब्लम फेस हो रहा था तो शायद इसमें क्या होता है ना कि स्कोरर बनाया जाता है, ठीक है। So I will respond in English just in case किसी को in case somebody else wants to understand. So from what I understand, for each RDM, a dedicated scorer is made. From what I understand, so maybe there could be some bugs in the scorer. Okay, so that is also a possibility. So I think if both of you face that, I think this is a big deal in that case. So in that case, let me just note it down. Scoring issues. Okay. स्कोरिंग इशू में एक और चीज आप थोड़ा सा इंक्लूड कीजिएगा। मैंने एक्चुअली फोरम पढ़ा था, ठीक है। हम्म, फोरम में बहुत सारे लोग मेंशन किए थे कि बहुत सारे लोग जो है हम्म, 90% एक्यूरेसी के साथ ना, मतलब उनका 90% टेस्ट केसेस सही जा रहा है, ठीक है। हम्म, और तो डेफिनेटली अगर 90% सिर्फ जा रहा है, ठीक है, तो कम टाइम लेगा, ठीक है। हम्म, 100%, हाँ, तो कम टाइम की वजह से ना वहां पे उनकी रैंकिंग्स बढ़ जा रही है, ठीक है। लेकिन वही जो 100% टेस्ट केसेस पास हो रहा है जिनका, उनकी रैंकिंग घट जा रही है, ठीक है। वहां पर ये भी चीज दिक्कत हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रही है। अच्छा, ये इतना मतलब हाँ। टेस्ट केस पार, मतलब पार्स होने में, मतलब प्रोसेस होने हाँ, में बोल रहे हो आप। हाँ, क्योंकि टाइम इन्होंने भी मेंशन किया कि टाइम के हिसाब से ना, मतलब टाइम के हिसाब से रैंकिंग बेस्ट होती है, ठीक है, अच्छा, तो आप बोल फाइनलाइज रहे हो, होती मतलब है। आप बोल रहे हो कि जैसे जो उसको स्कोर करने में जो टाइम लग रहा है, मतलब वो हाँ, ऐड हो जा रहा है क्या? हाँ, हाँ, ये हाँ, तो हाँ, ये ये तो नहीं, ऐसा 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 है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर वैसा है तब या तो बग हो सकता है या तो फिर ये उस दिन पता नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। और दूसरी बात, लोग्स प्रॉपर लोग्स नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि मैं पाइथन में हूँ, तो मेरे साथ क्या है कि अभी मैं न्यू हूँ पाइथन में, बहुत न्यू। अगर वही पीएचपी वगैरह दूसरा लैंग्वेज होता, हम्म, जावास्क्रिप्ट, मैं जावास्क्रिप्ट चूज किया नहीं एक्चुअली, पाइथन ही चूज करता हूँ जब। तो उसमें मेरे को बहुत सारे लोग समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा, क्लियरली। एक चीज सुनिए, लेकिन एक चीज और हो सकता है ना कि आपका जैसे पाइथन कोड रन करने में टाइम ले रहा हो, ये भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए सामने वाला जो भी है ना, अगर अच्छा, अच्छा। वो जावा, ये मान लीजिए C++ वगैरह में अगर या जावा में लिख रहा होगा वो, तो वो हम्म, सब काफी फास्ट होता है। तो ये भी हो सकता है, ये एक फैक्टर हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ ये, लेकिन फैक्टर होता है नॉर्मली। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जैसे मशीन लर्निंग कॉन्टेस्ट वगैरह,
पहले होता था आपका नॉर्मल नॉर्मल मैराथन मैच फॉर्मेट नहीं होता था पहले, ठीक है। तो मेरे को याद है कि मैं compete कर रहा था पाइथन यूज करके, तो समझ में आ गया था मेरे को कि कुछ भी कर लूंगा नहीं जीत पाऊंगा उसका। उसका कारण ये है कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कभी बीट ही नहीं हो पाएगा आपका सी प्लस प्लस का, ठीक है ना, पाइथन से। अच्छा तो अच्छा ये एक फैक्टर हो सकता है अगर इनहेरेंट कोई फ्लॉ नहीं हो तो। अगर इनहेरेंट फ्लॉ है तब तो होगा ही, अगर नहीं है तब उसके चलते भी हो रहा होगा। क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि एक्चुअली। पाइथन हाँ काफी हाँ। स्लो होता है, अच्छा। बहुत ज्यादा स्लो मतलब होता है पाइथन। पाइथन। हाँ मतलब खुद खुद मतलब वो उसका क्या है, देखिए पाइथन का क्या है, वो सिंप्लिसिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने मेंशन किया कि रनिंग टाइम डजंट मैटर इन आईडीएफ। तो रनिंग, अच्छा, एक एक्चुअली टेस्ट एक्यूरेसी मैटर करता है, ठीक है, ऐसा कुछ, अच्छा लेकिन लिंक कुछ तो इशू हो आपके रहा पास है। अगर लिंक है तो शेयर करिए यहाँ पे, अगर आपके पास आरडीएम का लिंक है तो। आरडीएम का लिंक। अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं बात कर लूंगा उनसे, क्योंकि मेरे को एक्चुअली खुद आइडिया है भी हाँ नहीं बहुत एक्चुअली, ज्यादा। इस पे मेरे को लगता है ना, एक डेडिकेटेड, जैसे कि कोई जैसे कि डॉकर पे बना था ना, एक डेडिकेटेड आईडीएम पे ही होनी चाहिए जो कि कंफ्यूजन को दूर करे। मेरे को लगता है इसका नीड है। मैं हम्म, अब जैसे कि मैं डायरेक्ट आपसे आस्क कर रहा हूँ, फिर आप उनसे पूछेंगे, फिर आप मेरे को बताएंगे। हम्म, वो जो होस्ट कर, लाइक पेना होस्ट करते हैं, सीधा पेना से बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ डेडिकेटेड आईडीएम के लिए ही। हम्म। हाँ, क्योंकि एवरी मंथ ये हो ही रहा है। अभी इस मंथ हुआ है, अगले मंथ मई में भी, इस मंथ में भी होगा ही, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पे एक डेडिकेटेड होना चाहिए 1 आवर शो, जहाँ पे आरडीएम आरडीएम कंफ्यूजन का थोड़ा कुछ है क्लियर। कि नहीं, आरडीएम का नहीं है क्या, मतलब कुछ डेडिकेटेड चैनल नहीं है ना। चैनल है आरडीएम का। अच्छा। हाँ, वो इसमें शायद डेवलपमेंट वाले में आरडीएम का एक चैनल है, ठीक है। हाँ बट हाँ वहाँ हाँ ज्यादा कोई कुछ है नहीं, वहाँ पे कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। हाँ बट मैं उसमें मैसेज करता हूँ कि एक हाँ, पर यही कीजिए डेडिकेटेड क्योंकि वीडियो चाहिए। हाँ मतलब देखिए ऑफिशियल यही है तरीका, मतलब ऑफिशियल तो यही तरीका कि यहाँ पे आके अब पूछिए हाँ, कि क्या भी हो रहा थोड़ा है। पुश कीजिए करके। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं भी हाँ। पूछ लेता हूँ एक बार, ठीक है। और हाँ, एक और चीज उसमें मैं देखता हूँ कि कोऑर्डिनेटर कोई और होता है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम देने वाले कोई और हाँ होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे को भी इनविटेशन आया था, जो हम्म मतलब आरडीएम 3 था ना, आरडीएम 3 के लिए हम्म प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के लिए या हम्म उसके लिए मतलब आया था मेरे को भी इनविटेशन। हाँ हम्म तो होता हम्म है, मतलब इनवाइट किए जाते हैं, मतलब इंटरनल टीम से कोई कुछ लोग, बट अच्छा। मोस्टली रिस्पॉन्सिबल पेना ही है इसके लिए। अगर आपको हो रहा है प्रॉब्लम तो आप उसको हाईलाइट कीजिए, मतलब और एक बार मैं भी पूछ लूंगा, ठीक है। खास करके लॉग्स के लिए, अगर लॉग्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो काफी हेल्पफुल होगा, सच में मैं बता रहा हूँ। तो ये बताइए काफी हेल्पफुल मतलब होगा। एक लाइन में सिंपल में बताइए ना कि क्या बोलना है, मतलब लॉग्स के बारे में क्या बोलना है बताइए, मतलब और मैं लॉग्स के समझा बारे नहीं पाऊंगा में ना, मैं तो सिंपल लिख के भेजूंगा उनको। तो बताइए क्या लिखना है, सिंपल में बताइए कुछ। जैसे कि क्या बोलूं मैं, जैसे कि टेस्ट केसेस दिए रहते हैं उसमें, ठीक है। हम्म एक्चुअली दो टेस्ट केसेस होते हैं, एक ऑफिशियल होता है और एक होता है टेस्टर। एक टेस्टर वो सैंपल टेस्टर देते ही है, ठीक है। बट हम्म सैंपल टेस्टर में ज्यादा टेस्ट केसेस होते हैं नहीं। वहां पर आप टेस्ट केसेस अगर आप लोकली पास भी कर रहे हो ना, ठीक है, तो हम्म। गारंटी नहीं है कि 100% वहां पास होगा, ठीक है। और अच्छा। जब हम वहां पास करते हैं, ठीक है, हम्म तो जैसे कि हमें टेस्टर में एक दो टेस्ट केसेस दिए रहते हैं, हम्म और ऑफिशियली शायद 10 या 12 टेस्ट केसेस रहते हैं। पिछले बार शायद हम्म। मीडियम में 12 था, ठीक है। तो टेस्ट केसेस दिए रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जितने टेस्ट केसेस पास हुए, कौन सा फेल्ड हुआ, उसमें फेल्ड फेल्ड तो लिखा होता है, बट एग्जैक्टली क्या मिसिंग है, क्या फेल्ड है, वो नहीं पता होता है। दूसरी बात है, वहां पे एक चीज मेंशन होता है, स्क्रीन शॉट डॉट पीएनजी करके कुछ, ठीक है, कुछ फाइल, बट वो चीज भी रिसीव नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, ठीक है। मे भी ये हो रहा है। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है एक्चुअली, मतलब ये इस टाइप का डिटेल पता होना उसमें है क्या, या मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट उसमें आंसर ही मिलेगा ऐसा पहले से बोला हुआ है, मतलब ऐसा पता हो नहीं सकता है क्या कि है। नहीं ऐसा। एक मिनट। स्क्रीनशॉट सेंड करो, क्या मेरे पास लॉग का फाइल होगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल सकता हूँ क्या? यहाँ पे तो एक डाल मिनट। सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर मैं भी करूंगा फॉरवर्ड उधर। एक मिनट रुकिए, फॉर सबमिशन आई गॉट कंफ्यूजन, देयर इज नो कोड फोल्डर इन द सेम सबमिशन, सबमिशन नीड्स टू बी इन दैट फोल्डर, देन आई हैड अ फ्यू इश्यूज विद द टेस्ट केस इन द हार्ड सबमिशन। ओके, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि आइए वहाँ पे, आप या थोड़ा तो बोलिए पुश तो कीजिए। मैं यहीं पे आपको लिख दूं कि यहाँ पे लिख दूं अभी कि कैन यू गाइस डिस्कस अबाउट योर इश्यूज हियर, मैं लिख दूं यहाँ पे, फिर आप लोग रिस्पॉन्ड कर हाँ लीजिए। लिखिए। हाँ हाँ, लिखिए हाँ लिखिए। नहीं यहाँ पे मतलब मैं डिस्कॉर्ड का बात कर रहा हाँ, डिस्कॉर्ड की बात है। हूँ। ठीक है, आपका हैंडल क्या है? क्या बोलते हैं, एस दीपक कुमारी है, नहीं नहीं हाँ। नहीं,
इनका सी धर्म तेजा। उनका भी शायद धर्म से, सी धर्म से इनको। ठीक है, मैंने वही चैनल में मैंने मतलब कमेंट कर दिया है। ठीक है, आप लोग उसको फॉलो अप में लिख दो कि क्या क्या इश्यूज हो रहा था। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, अब यही करना होगा। हाँ ठीक है, वैसे अगर नहीं होता है फुलफिल तो आप बताइएगा। ठीक है, आप मेरे को डीएम कर दीजिएगा डिटेल्स के साथ में, तो फिर मैं बात कर लूंगा। मतलब अगर पेना से अगर नहीं हो पाएगा फिर तो जैसे से बात कर लूंगा, या जो भी फिर इन्वॉल्व होगा उनसे फिर पता कर लूंगा फिर क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, एक्चुअली टेस्टर का इशू है बस, ठीक है, अगर हाँ टेस्टर है टेस्टर तो थोड़ा फिर, सा। हाँ अगर इशू है तब तो उसको सॉल्व करना होगा ना, क्योंकि इतने लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम है तब तो उसको देखना होगा। तो बताइए डिटेल में क्या है, अगर पता चल जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखते हैं आगे का। ठीक है। हाँ हाँ, मैं उसमें लॉग्स पे मेंशन करता हूँ, और सब देखता जो हूँ जो आपने लॉग्स। हाँ बोला है अभी सब मेंशन कर दीजिएगा, वो 90% हाँ। 100% सब एक एक करके आप मेंशन कर देना। ठीक है। इन्होंने भी लिखा कुछ लीडर बोर्ड का इशू है, ये भी अपना हाँ इशू डाल देंगे। हाँ, हम्म। चलिए फिर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और आरडीएम का यार मेरे को लगता है कि एक आध करना पड़ेगा मुझे भी कंप्लीट, तब समझ में आएगा कि वो क्या रहा है उसमें। कीजिए ना आप फिर। अच्छा लगा, क्योंकि सच में एटलीस्ट आप समझा पाएंगे अगर नेट का देखिए इशू होता होगा क्या है तो। ना, मैं बताता हूँ। जैसे कि होता क्या है कि टॉप कोडर में ऑलरेडी शाम में 3-4 घंटा देना होता है ना, जैसे काम जो करना होता है, जो काम करता हूँ मैं। हम्म। तो फिर उसके हम्म। बाद एनर्जी नहीं बचता है करने के लिए, क्योंकि घर में भी जैसे बहुत काम रहता है, तो सब मिला जुला करके समय बचता ही नहीं है कंप्लीट करने के लिए ठीक से अभी। बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है ट्रैक करने का कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, हम्म। हाँ, सही रहेगा ये भी। चलिए बताइए कुछ और और बाकी क्वेश्चंस। कुछ न्यू न्यू कुछ आ रहा है क्या न्यू, टॉप हाँ कोडर बात हो में? रहा है, बात हो रहा है न्यू, वही कि मतलब वही मैंने आपको जो बताया कि इंटरनल टीम जो है वो ट्राई कर रहा है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स लाए, ताकि कुछ यूजफुल क्रिएट हो जाए उसी प्रोसेस में, और चैलेंज भी होस्ट हो जाए इसके चलते। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जनरल चैलेंज चैनल है डिस्कॉर्ड में, वहां जाके सजेस्ट कीजिए जिस टाइप का भी चैलेंज आपको देखना है। ठीक है, तो अच्छा, क्योंकि वहां एक पे, एक हाँ। हाँ हाँ ठीक है, कहिए। क्योंकि क्योंकि जैसी लोग को मैं जैसी को मैंने बोला था कि वहां पे डिस्कस करते हैं, तो वो ट्रैक कर रही है पूरा कि क्या आ रहा है फीडबैक, और उसके अकॉर्डिंगली मे बी आज या कल डिस्कशन भी कर लेंगे हम लोग जैसी से। ठीक है, तो आप एक बार हम जो भी है एक बार शेयर कर दीजिए वहाँ पे। अच्छा, बस लिख मेरे को दीजिए एक वहाँ पे। क्राइटेरिया जानना नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम पहले, लाइक एक मंथ पहले मैंने चैलेंजेस के बारे में कुछ लिखा था मैंने, ठीक है। बट फिर आपसे बात हुई, फिर जैसे मैम से बात हुई, रिस्पॉन्ड ज्यादा मिला नहीं, उनको मैं मेल करा था। होता वही है, देखिए तो होता मैं। क्या है ना कि जैसे टॉप क्वार्टर में इंटरनली ये होता है कि इतना सारा आइडियाज रहता है ना, जैसे अगर आप कभी रहते हैं इंटरनल ना, तो आपको दिखता है यहाँ पे कि इंटरनली बहुत सारे आइडियाज होते हैं। ठीक है, बहुत सारा आइडियाज होता है, मतलब हर मतलब जैसे जितना लोग इंटरनली काम कर रहे हैं सबका 15-20 आइडिया है। ठीक है, जैसे आपका अगर 10 आइडिया होगा ना, तो इंटरनल टीम का 20 आइडिया होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सब मिला जुला करके लास्ट में कुछ 2 ही 3 या 4 में कुछ काम होता है, तो यही होता है फाइनल। लेकिन फिर भी अभी गिवन दैट कि राइट नाउ ये काफी हाई प्रायोरिटी में चल रहा है, मतलब तो इसलिए शॉर्ट में आप लिख दीजिए कि शॉर्ट में लिख दीजिए कि पाइथन बेस्ड चैलेंजेस देखना चाहते हैं या कुछ भी। नहीं, एक्चुअली काफी था, एक क्राइटेरिया बस हमें अभी टॉप कोडर जो है जो भी हम्म, चैलेंजेस होस्ट करती है, वो बेनिफिट के हिसाब से करती है। हाँ बेनिफिट, हाँ मतलब टॉप मतलब कोडर का उसमें हम्म, फायदा होना चाहिए, हाँ लाइक वो फायदा होना फ्री चाहिए, में तो लेकिन ऐसे नहीं। हाँ। लेकिन अभी 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 शायद टॉप कोडर अपने तरफ से पैसा लगा के भी करेगी। ये जो इंटरनल जो वर्क है ना, ये इंटरनल वर्क जो है वो एक्चुअली टॉप हम्म। कोडर अपना खुद का पैसा लगा के भी करने वाली है होस्ट। हाँ, मैं चैलेंजेस का कुछ प्रकार है, मैंने मेंशन एक दो मेंशन करा था उनको, ठीक है। मैंने तो उनको ये भी बोला था कि मतलब अगर खुद से अगर पैसा लगा तो डेफिनेटली उनको हैकेथॉन की ओर जाना चाहिए, ये लोगों को काफी वो करेगा। बताइए किस टाइप का मतलब देखना चाहेंगे, किस टाइप का हैकाथॉन, पाइथन वगैरह मैं का कुछ। मेंशन करता हूँ, मैं हाँ ठीक, जनरल में मेंशन करता हूँ एक ठीक हाँ। लंबा सा मैसेज। नहीं लंबा से मत कीजिए, एक्चुअली छोटा ही लिखिए, पता है क्यों? क्योंकि होता है कि कोई लंबा रहता है ना तो मोबाइल में पढ़ने में नहीं बनता है। ठीक है,
तो आप छोटा ही में लिखिएगा, उसके बाद अगर कोई फॉलो अप करता है तो आप बड़ा में लिखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा, होता है। मैं पहले बड़ा टॉप मतलब क्या बोलते हैं मेन मेन पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ और उसका डिटेल में बाद में, ठीक है, हाँ, चलिए ये डिटेल भी में सही जैसे है। कि जैसे वगैरह या कोई भी फॉलो अप करे ना, उसके बाद आप डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो होता हम्म यही है कि जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी वो लोग उठेंगे, अभी उठने का उनका टाइम हो गया, या मे भी उठ हम्म गए होंगे शायद अभी वो लोग। तो अभी एक हम्म लाइन से वो लोग पूरा जाएंगे लिस्ट में। तो मैं बता रहा हम्म हूँ ना, जैसे मैं भी कभी कभी उठता हूँ तो जैसे जनरल खोलता हूँ, तो कभी कभी जैसे बहुत बड़ा बड़ा मैसेज होता है ना, तो समय नहीं मिलता है पूरा पढ़ने का, जैसे एक एक ऊपर से लिखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बेटर यही है कि पहले शॉर्ट में लिखिए, फिर जब कोई फॉलो अप कर ले उसके बाद फिर अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये भी सही है। हाँ, तो वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मैं करता हूँ हाँ ये हाँ, बस आप दो, मार्केट के हिसाब अब से। हाँ आप दो चीज कर दीजिएगा, आप अलग अलग कर दीजिएगा कि पाइथन का आपको देखना है प्लस आपको हैकाथॉन भी मन कर रहा है देखने का। आप दोनों सर्च कर दीजिए अलग अलग, ठीक है। अकॉर्डिंगली मिला के करना होगा तो मिला के कर लेंगे, या जैसे भी करना होगा कर लेंगे फिर उसको, ठीक है। सही रहेगा क्या? हाँ, चलिए और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर अच्छा वो क्वेश्चंस कभी खत्म ही नहीं होते। डिस्कशन लेकिन मतलब काफी जल्दी पार होता है, नहीं इतना लंबा प्रेजेंटेशन था लेकिन वो एक्चुअली 20 मिनट में खत्म हो गया, और अभी हम लोग का डिस्कशन में एक्चुअली 20 मिनट का हो गया है। तो होता ही है, मतलब जनरल जनरल बातचीत में टाइम जल्दी बीतता है। हाँ, वक्त का पता नहीं चलता। हाँ। टाइम उतना ही जाता है बट वक्त का पता चलता हम्म। नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज हो रहा है अभी, आपके साइड में कैसा है अभी? उधर भी तो हो ही रहा होगा। मेरे साइड अभी तो ठीक है, बट हाँ गांव मतलब, में अभी 2 दिन से लाइट नहीं है। मैं गांव में हूँ नहीं। अच्छा है अच्छा कि मैं गांव में नहीं, वरना अच्छा, आज मैं कर भी नहीं पाता बात। कहाँ पे मूव हो गए आप अभी? अभी मैं पटना में हूँ, बट अभी बेंगलोर जाना है अच्छा। शायद। हाँ सही मैं है, सोच रहा हूँ मतलब थोड़ा। सही है, मतलब सही माहौल में रहेंगे तो बेटर कंप्लीट कर पाएंगे, तो सही है। थोड़ा सा पैर फैलाना पड़ेगा ना, अभी हाँ हाँ, काफी टाइम से। सही बात है। चलिए बताइए, है कोई क्वेश्चन तो पूछिए, नहीं तो फिर अच्छा खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक करते हैं। आप खत्म कीजिए फिर नेक्स्ट हाँ वीक, और क्या। ठीक है, तो चलिए डिस्कॉर्ड पे फॉलो अप करते हैं, ठीक है, जो भी आपके हैं आप शेयर कीजिए, हाँ हाँ, मैं फिर हम लोग करते हैं। लिखता हूँ मैं। हाँ चलिए फिर, it was fun गुड talking to नाइट। you. हाँ, good night, it was fun talking to everybody, see you next week.